हमने तभी नहीं सोचा था कि हमारी केमिस्ट्री अच्छी रहे। वही बोलने वाली थी, क्योंकि अभी भी जब आप यहाँ फंस गए थे लिफ्ट में, अरे यार she was enjoying that moment, you had no idea वो मतलब आप देख रहे हैं कितनी अच्छी दोस्त है कि उसका दोस्त फंसा हुआ है लिफ्ट में और बाहर बात चल रही थी कि 5 घंटे इंसान एक फंसा हुआ था, गर्मी के मारे बेचारे की सांसें रुक गई थी। जो पहले हंसते ये वीडियो बना रही है और हंस कर रही है, मैं तो देख रहा हूँ। वो असली दोस्त होते हैं जो पहले हंसते हैं फिर हेल्प करते हैं। तो इसलिए हम लोग इतने अच्छे दोस्त हैं। आई रियली डोंट वांट टू लूज दिस। आई हैव टोल्ड हिम, मैं तो उसे धमकी दी है कि ये मतलब तुम बदलना मत, ऐसे ही रहना। हमारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी, टच वुड। So it's yeah, we really have our, like, we really do have so much fun. I think there's a side of me that comes out when Siddharth's there that nobody else knows about, and I think there's a side of Sid that only comes out when I am around and nobody knows about. So yeah, we really have a lot of fun. Absolutely. हम बहुत सा जेलअप करते हैं, like whenever we meet, we always laugh, we talk about things, we talk about you know, our personal things also, you know, life, career, work, everything. So I think that's why we gel up very good. Yeah. Okay. So when you all meet, because you both are in the same industry, same profession, sometimes do you all meet each other and be like, काम की बात नहीं करते, कुछ और बात करते हैं? See, the thing is, पता नहीं ऐसे होता है मेरे साथ। मैं जब सिद्धार्थ के साथ बात करती हूँ, the conversations kind of just fall into place, like we don't have to think about what we are talking about, and like he said, we have a range कि हम serious बातें भी कर सकते हैं, but we can also talk about our work without it feeling like oh this is a competition, मैं share नहीं कर सकती, वो share। उल्टा we take it as an advice, क्योंकि what will, you know, Siddharth would have a nice advice for me or I would have a nice advice for him. Then talking about personal life we go through, after all we are 20, 21, 22 year old people also, so you know हम वो भी discuss करते हैं कि you know how lives are just, our lives are very simple but sometimes complicated at times, so we discuss that also, so it just falls into place. We don't have to discuss कि अच्छा ये बात कर सकते हैं, I don't feel कि अच्छा ये बात करनी पड़ेगी, ये बात नहीं करनी चाहिए, so it's very easy. It's a good thing that आपके ऐसे दोस्त होने चाहिए जो सेम फील्ड में होते हैं और आप उनसे ओपनली डिस्कस कर सकते हैं एनीथिंग फ्रीली, विदाउट एनी कंपटीशन, विदाउट थिंकिंग एंड विदाउट जेलसी. यू कैन टॉक एनीथिंग about your you know, your career, about them. It is very important to have such friends because हम कहते हैं ना कि इंडस्ट्री के बाहर के जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, दे माइट नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग थ्रू, हमारे लाइफ में क्या चल रहा है, फिर इंडस्ट्री में क्या कैसी चीज़ें क्या क्या हो रही है. बट एक सेम इंडस्ट्री, सेम फील्ड से जब आपको कोई दोस्त होता है जिससे आप फ्रीली शेयर कर पाते हो चीज़ें, डिस्कस कर पाते हो कि मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. एंड आई फील दैट हमारी बॉन्डिंग वैसी ही है. बिल्कुल. एंड वो मुझे अच्छा लगता है कि हम दोनों में मैं जब बात करती हूँ मुझे ऐसा फील नहीं होता कि ही इज़ जजिंग मी और यू नो ही इज़ गेटिंग जेलस और एनीथिंग. ही इज़ वेरी सिक्योर विथ हिमसेल्फ एंड आई रियली लाइक हैविंग फ्रेंड्स और सिक्योर विद देमसेल्व्स. एंड आप उनके साथ बात करो तो आपको वो डर नहीं लगे कि अरे यार वो इंटिमिडेट हो जाते हैं, वो तो यू नो देयर इज नो sense of jealousy, we just support each other, we get inspired before talking to each other. Absolutely. Like we can share anything, like यार मेरा ये प्रोजेक्ट का मैंने you know ऑडिशन दिया था, ये हुआ नहीं यार, यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गया, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, क्या किस चीज़ में लैग कर रहा हूँ मैं. देन अब ये बात है अगर मैं किसी ऐसे दोस्त से करूँ जिसको पता ना हो इस इंडस्ट्री के बारे में, तो अरे यू आर डूइंग गुड, wouldn't relate, बट वो रिलेट नहीं कर पाएगा. बट अगर मैं अनुष्का से बात करूँ, शी माइट यू नो टेल मी नो आई थिंक ये चीज़ें हो सकती हैं, वो चीज़ें हो सकती हैं, आई थिंक यहाँ पे कुछ अलग चल रहा है, यू शुड गो देयर. दैट इज हेल्पिंग, दैट इज यू नो पुशिंग ईच अदर अप. नाइदर यू नो ऐसा नहीं कि हम एक दूसरे को पुल करते हैं, वी ऑलवेज ट्राई टू पुश ईच अदर, वी ऑलवेज ट्राई टू सपोर्ट ईच अदर. एब्सोल्युटली. कल को कुछ भी होता है, वी ऑलवेज लाइक यू नो यू आर डूइंग गुड, आई एम गोना help you and I'm going to support you. तो अच्छा भी लगता है. I to say he's my love guru also. He gives me relationship advice. Love guru? Is it? I am not a love guru. He gives me relationship advice also. Oh, like, जैसे मैं बहुत experience listen, ठीक है, when you get into a relationship, don't do this, okay? This is not right for you. Don't get into boy trouble. Like he'll fully ऐसे मेरे को sometimes will get into full deep कि नहीं, you know, you're a nice person. You're supposed to be with a nice person. I'm like, oh, thank you so much. So he gives me relationship advice also. You take those advice? Absolutely, because I told you, it's great advice, very good advice. Love guru, Siddharth Nigam, love guru. Oh, come on. Just lift में फंस जाता है, वरना ऐसे हाँ मतलब कभी कभार हो जाता है. आप लोगों की जर्नी बहुत ही बेहतरीन रही है. You all have started as child artists and
वो एक consistency maintain करके रखी है right from the start, and now you all have admirers from all age groups. So how does it feel to come this long way? You have stepped into the Korean entertainment industry. Right. You're also the first Indian brand ambassador. Right. You are a martial arts expert, great at what you do. You've done Bollywood also now. How does it feel? You look at the entire experience and the journey. I mean, see, it's very inspiring when I look back, and I get very motivated to even do better. Like every morning I wake up and I remind myself that sometimes what happens, no, that हम अपने goals के पीछे इतने भागने लगते हैं, and we are just thinking about our goals. We're like, what's not working out. We're only thinking about what's not working out. But you should also sometimes sit and think that, oh, 5 years back, I was trying to manifest this life, and right now what I have is what I wanted to be when I was 13. So I'm really grateful. By God's grace, this year has been really good for me. Representing India on an international level is a really big responsibility for me, but I hope I can do that well. I'm the first, like you said, the ambassador of Korean tourism, and I hope that I can actually become the bridge between Korea and India. Representing India all over the world. Yeah, and it was my dream to do that. I used to look at K-dramas and be like, oh, I also want to do something like that. I saw that video also. I think. You saw, you know, it was such a surprise. They told me that okay, Taekwondo group is going to probably invite you on stage. So I'm like, okay, you know, मैं जाऊँगी और मैं ऐसे pose करूँगी, and you know, I'll just be myself and whatever. They told me to break like those plates and all, which I couldn't break through my bare hands like this. Then they asked me to punch it, then kick, and I was so nervous because the entire mall was looking at me. But I did it, and you know, they're very nice people. So, like, by God's grace, everything's been great. But there's a long way to go, and I hope that this passion of mine to, you know, just make it happen doesn't fade, and I just get inspired and motivated as much as possible. Siddharth. All I can say, see, if you ask a ordinary boy कि वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहता है, so आई कम फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पर कभी कभार मुझे लगता था कि मैं जो ड्रीम देख रहा हूँ ये क्या मेरी औकात में है भी या नहीं, यू नो, यू थिंक लाइक दैट. बट आई बिलीव कि एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए क्या होता है यार, टू हैव अ नाइस लाइफ स्टाइल, टू मेक हर मदर प्राउड, टू मेक हर फैमिली प्राउड, टू मेक हिज फैमिली प्राउड, एंड टू लिव अ नाइस हेल्दी लाइफ स्टाइल. दैट्स इट. सो आई थिंक तो जो मेरी जर्नी रही है फ्रॉम आई कैन से फ्रॉम ज़ीरो टू हियर, और अभी आगे और लंबी जर्नी है मेरी. सो आई ऑलवेज फील ग्रेटफुल, आई ऑलवेज फील ब्लेस्ड कि ऊपर वाले ने मुझे इतना, यू नो, मौके दिए हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, और ब्लेसिंग्स हैं लोगों की, मेरे फैंस का प्यार है. अदर समटाइम आई बिलीव कि आई डोंट हैव एनी वन एक्सेप्ट माई फैंस एंड माई फैमिली. फ्रॉम द day one, my friends are always there for me. But I just believe, you know, sometimes when I sit back and think of my past, me, my mother, my brother, when we sit together और हम जब डिस्कस करते हैं कि यार आज से 6-7 साल पहले हमारे पास तो कुछ भी नहीं था. लाइक ना घर था, ना गाड़ी थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हमारी ज़िंदगी का होगा क्या. बट देन ऊपर वाले ने, आई ऑलवेज से दैट आई फील ब्लेस्ड, आई फील ग्रेटफुल कि ऊपर वाले ने मुझे, यू नो, जो ब्लेसिंग्स दी हैं, उसकी वजह से भी आज मैं जहाँ हूँ वहाँ पे हूँ, एंड बिकॉज माई मदर्स ब्लेसिंग. और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि आई डोंट वांट टू गो बैक, आई जस्ट वांट do better every day, and I just want to make my life better and better and better every day. जब हम सक्सेस की ओर बढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ें पीछे भी छूट जाती है, तो उसका रिग्रेट होता है कभी? I don't think this is true. I feel कि you know, मैं जब स्कूल में भी थी तो लोगों को लगता था कि मैं अपनी, मतलब I'm missing my childhood memories, or I'm not playing, or I'm not living like जैसे teenagers you know खेलते हैं, वो करते हैं. But that never really happened with me because my parents really made sure कि काम करते करते ऐसा नहीं हो कि आप ज़िंदगी एंजॉय नहीं कर रहे हो. बिकॉज यू हैव टू रिमेंबर दैट आफ्टर ऑल, आई हैव टू कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ, आफ्टर ऑल आई एम ऑल्सो अ चाइल्ड, आई एम ऑल्सो, यू नो, गोइंग थ्रू हाउ अ पर्सन इज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम अ टीनेजर टू एन अडल्ट. सो दैट ट्रांजिशन इज ऑल्सो हैपनिंग. सो जो आप अपनी ज़िंदगी है, मतलब अपने दोस्तों के साथ आप घूमने जाते हो, यू नो, आप मस्ती करते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक द फ्रेंड्स इन योर लाइफ, my family, they have played a very important role in making sure that I don't miss out on these moments which are really really special. So work एक जगह है, but personal life also I have made sure that I also have that. I have my own time with myself. आपका एक खुद का भी time होना चाहिए where, you know, you spend time with yourself.
doing things that you like to do, maybe just read a book, maybe paint or whatever you like. But I think it's very important to balance that out. Yeah, you or balanced else, it out. Yeah, because or else it just feels like time's just slipping away, and then you don't get to have fun. Then when one day you will wake up and you'll be like, okay, I have money, I have fame, but I don't have memories from my life, so that's not nice. So it's equally important to have a very good life and balance everything out. This is very important that you said that. You look back and you see there are no memories. Yeah, like that happens ना, because you're just right now we are at that age, I think हम इतने ambitious हो जाते हैं कि ये करना है, वो करना है, ये भी करना है, वो भी करना है. We have to kind of also calm down and relax and be like, okay, I'm very grateful for what I have right now. I have my friends I can chill with, I can make somebody smile. Just eat pani puri. I mean, just do the basics, but Yeah. it's important to make memories. That's the reason why I travel with my parents, because जब एक ऐसा time होता था, I couldn't see my father for a week because I was working so continuously. He would go to his office, I would be on set, मैं उनसे मिल नहीं पाती थी. My mom would always be with me, but ऐसा लगता था कि मेरा परिवार 3 लोग ही हैं, but हम एक साथ नहीं रह पा रहे हैं. But now I'm at that place where I can decide to take a holiday and go, with my parents. That's why I travel with my parents, because I want them to, because they have been with me in my struggles, so I want them to see, my good things also, good times also with them. I don't know how do I say this, कि मुझे कुछ मैं मिस करता हूँ या रिग्रेट करता हूँ अपने पास्ट से. I don't miss anything because as I told you that मतलब हम लोग का जो पास्ट, जो मेरा हमेशा पास्ट रहा है, वो ऐसा रहा है कि अगर आज मैं किसी मॉल में जाता हूँ और मुझे कोई अच्छा खिलौना दिखता है, तो मैं ऐसा रहता हूँ यार मैं ये खरीद सकता हूँ, आई कैन बाय इट एंड आई कैन प्ले इट. तो कभी कहता है तू बड़ा हो गया है, अब तू ये क्यों खेलेगा, क्योंकि बचपन में वो मौका नहीं मिला कभी खेलने का. बिकॉज मुझे याद है जब मेला भी जाते थे, तो मेले में नहीं वो ऐसे कॉटन कैंडीज होती थी, खिलौने होते थे, तो हम वो देखते थे, उठाते थे, प्राइस चेक करते थे, वी लाइक नहीं यार ये ज़्यादा हो जाएगा. वो भले 100 रुपये का होता था, बट यार नहीं ये ज़्यादा, रख देते थे. तो आई थिंक आज जो ऐसा है कि आज हम जाते हैं, अरे ये कार अच्छी है, ले लेते हैं, मैं तो खेलूंगा. तो वो कभी कभी वो एन्जॉयमेंट, आई थिंक मैं वो अपना जो मेरा बचपना है, मैं वो कहूँगा कि मैंने अपना बचपना ऐसे कभी उतने उससे जिया नहीं. एंड आई डोंट फील बैड अबाउट इट ऑल्सो, क्योंकि आई वॉज एन्जॉइंग व्हाट आई वॉज डूइंग माई जिमनास्टिक्स, आई वॉज फुल्ली फोकस्ड ऑन माई गेम. एंड देन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, सो देन मैं इधर भी बिजी हो गया. एंड विथ माई वर्क, जो भी मैंने काम किया, उस काम ने हमेशा मुझे अपलिफ्ट किया है, मुझे मेरी फैमिली को, मेरे रहने के तरीक़ों को. तो आई थिंक मैं इन चीज़ों को ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ. एंड